आमर सौभाग्य आम गणराज्य अच्छा केंद्रीय निर्वाचन कमिशन पूर्वतन वरिष्ठ एडवाइजर श्रीयुक्त भगवान प्रकाश जहाँ सहयोगितार आम ए कार्यक्रम को आगे नौचु एवं यही निर्वाचन संस्कार दिगरे जितोटी आलोचना हो पार आज केवल प्रारंभ जेहेतु आम गणरे आज जन विशेष अतिथि अच्छा तेणु आम आरंभ करवा श्रीयुक्त भगवान प्रकाश ठारू जे आज विशेष वक्ता भाव आम गण योगदान करछंती। वर्तमान अनुरोध करी श्रीयुक्त भगवान प्रकाश जे कि जातीय नेता मान सहित तांकर बहु सुसंपर्क थिला विगत 6-7 वर्ष धरी से केंद्रीय निर्वाचन कमिशन रे वरिष्ठ उपदेष्टा भाव कार्य करछंती। आम आलोचना को जो असिस्टेंट रिटर्निंग अफिसर्स माने जो मान सब फील्ड रे निर्वाचन परिचालना करथिले से माने किछि प्रस्ताव दैछन्ती से प्रस्ताव मु सार को देछि सार तांकर वक्तव्य छल रे से गुडी को आलोचना करिवे एवं आमे आलोचना परे केवल प्रश्न पचारिबा किंबा किछि प्रस्ताव दबा नो क्वेश्चन ऑफ स्पीच तेणु बर्तमान आम आरंभ करवा श्रीयुक्त भगवान प्रकाश से तांकर बहुमूल्य वक्तव्य बर्तमान प्रदान करेंगे। सर कहतु। नमस्कार समस्त को। नमस्कार 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 बरदा प्रश्न को विशेष भाव रे ही इज ए वेरी हार्ड टास्क मास्टर। तो सी मते फिक्स करिया पूर्वरु परे he has been constantly and consistently guiding me what are the issues, what is to be done, what are the most living topics to be spoken about, discussed about। मु गोटे आपण मान समस्त अनुरोध करी फॉर ए मोमेंट टू थिंक अबाउट ए पर्सन हु इंडिया's फर्स्ट वोटर आपण ना सुनिथिबे तांकर who has voted for 34 times, India's first voter। He voted for the first time in 1951 October। He is from Himachal। His name is Sam Saran Negi। So Sam Saran Negi, very unfortunately, he से तांकर शेष निश्वास त्याग करिसेंती एही मासरे नवेम्बर मास 2 तारिख रे 3 तारिख रे आफ्टर कास्टिंग हिज वोट फॉर द 34th टाइम। 34 पर तांको बयस 106 वर्ष 106 वर्ष बयस रे भारतर प्रथम वोटर केमती ना 1951 रे से प्रथम वोट देले। आमर फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वाज हेल्ड इन 1952 not 1951 but he cast his vote in 1951 6 months before काहेकि हेते बेले हिमाचल was very cold एवं सबडे बरफ पड़ितला एवं ठीक समय इलेक्शन हेई परिवनी इंडिया's फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। तेणु सेते बेले अथॉरिटीज इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि आमे इलेक्शंस 5 मास आगुआ किन्नौर अंचल हिमाचल किन्नौर रे करिवा। So in the Kinnaur area of Himachal in 1951 Sam Saran Negi went to the polling station and cast his vote for the first time, India's first voter who is no more। So we pay our regards in his memory। एवं तांको 106 वर्ष होइतला जेते से 34th टाइम वोट देले assembly including assembly elections, parliament elections, municipal elections। Total 34 times he cast his vote। So this is Sam Saran Negi। एवं last moment रे जेते से वोट तांको देले 34th time he was unable to walk because he was 106 106 वर्ष बयस तांको हेतला। तेणु से पोस्टल बैलेट रे तांका 34th टाइम पार्टिसिपेट कले इलेक्टोरल प्रोसेस। तो आम देश रे इलेक्शन संपर्क रे बहुत डिस्कशन होउची समालोचना होउची
आम इलेक्ट्रल सिस्टम पर डिस्कशन समालोचना होची किंतु आई एम पेन टू टेल यू द इलेक्शन संपर्क रे बौद्धिक आलोचना बहुत कम होची आम देश रे एवं ता भितरे थिंकर्स क्लब इज वन ऑफ देम ये संपर्क आपण एकाठी छी ने आम देश रे इलेक्शन संपर्क रे समालोचना बेसी होची आलोचना कम होची तेणु ये जो आलोचना आप आरंभ कर दिस इज ए वेरी कंटेम्पररी इश्यू राइट इश्यू एवं ताकू जो जो इश्यू आपण मन रखुछंती समय तो बहुत कम रही आम किछिटा हाइलाइट करबा मु किछि देखिछि सम सजेशंस ऑफ कम मुआ घर को सेगुडू पढी देबी इलेक्शन मैटर्स provision for allowing contest in more than one constituency एटा गोटे बर्निंग इश्यू जे आम देश रे आपण मान देखिछंती जे कि बड़ी दी थर गोटे जणे जणे लोक दीटा कॉन्स्टिट्यूशन ठिया होछंती दीटा जितेले गोटा को रिजाइन करूछंती से रिजाइन कला पर से पुणी इलेक्शंस होउची सेठी पुणी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू लागू होउची सेठी पुणी स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट बिल्डिंग बंद होउची इलेक्शन डे दिन तो ए जो प्रोसेस टा होउची लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ मनी तो जो इश्यू टा आपण रेज करछंती इट्स ए वेरी राइट एप्रोप्रिएट इश्यू जे आमे इतरे सजेशंस अछि जे आमे दुई जणे लोक को जणे प्रार्थी की दीटा निर्वाचन मंडल एकाठी ठिया हबार सुजोग दबा नहीं तो लॉ शुड बी अमेंडेड ए इश्यू परे मु आपण मानु कहया को चाहूची इलेक्शन कमिशन is fully supportive of this view. Election Commission, National Law Commission, Supreme Court of India, they are on the same page. आपण मानकर मने थिबो 1996 मसिया पूर्वरु ए प्रोविजन आहुरी खराब थिला सेते बेले जीए चाहिमो जेतेटा सीट रे चाहिमे से ठियाई परिबे जा प्रथमे रोक लगाई कि 1996 मसिया ताकू रिड्यूस कला हला मिनिमम 2 मैक्सिमम 2 रो अधिक जगह रे केही ठियाई परिबे नै बर्तन होची मैक्सिमम 1 बर्तन डिमांड होची मैक्सिमम 1 एबो एई डिमांड पर विचार आलोचना आरंभ हेची सुप्रीम कोर्ट तांकर मत देइछिंदी एवं इलेक्शन कमिशन इज सपोर्टिव ऑफ दिस व्यू इलेक्शन कमिशन जो व्यू थिला से व्यू रहउची से गोटी रो अधिक जगह केही इलेक्शन लड़ी परिबे नै एवं तांकर आउट अल्टरनेटिव व्यू थिला जे जदि लड़िले किए जदि द फर्स्ट प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेबल ताहले द सेकंड प्रपोजल जे लड़िबे से जेते बेले गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजाइन करबे से कॉन्स्टिट्यूएंसी रे जे जेते खर्च होइतला से सब खर्च से डिपोजिट करिवे so the second alternative was not acceptable law commission was against it and supreme court was against it and most likely this is being taken care of about the government of India very soon election commission will take a decision that is one suggestion the second suggestion was free and fair elections so free and fair elections ha pai mu khali एटा गोटे कॉमन कंसर्न जे इलेक्शंस फ्री फेयर कथा समस्त कहउछंती किंतु इलेक्शंस फ्री फेयर केमति हबो फ्री फेयर इलेक्शंस हा पे कोन कोन दरकार सेठी कि तीनटा बेसिक रिक्वायरमेंट होची an independent electoral management body free and fair elections ensure करे पे गोटे independent electoral body independent elected electoral management body number 1 requirement number 2 होची a set of rules strong rules governing conduct of these elections without any interference number 3 hela an effective mechanism of dispute resolution कारण इलेक्शन समय एते डिस्प्यूट हुए जे सेथे पे mechanism is not adequate mechanism is not strong and mechanism is not empowered
अनेक आपणकर मन धारणा थी इलेक्शन कमिशन 8 वर्ष रही मुझे देखिली फ्रॉम ए क्लोज क्वार्टर्स आई ऑब्जर्व द इलेक्शन कमिशन is mostly a very powerless body. जदियो आमे ताकू कॉन्स्टिट्यूशन रा अथॉरिटी बोली कहूचे हमर जो टोटल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी रा चारिटा पिलर पिलर नंबर 1 होची रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इलेक्शंस थ्रू इलेक्शंस लोके तांकर प्रतिनिधि की बाछिबे एवं तांकर प्रतिनिधि शासन देश को शासन करेंगे तो इलेक्टोरल गवर्नेंस दैट इज नंबर 1 पिलर नंबर 2 इज पॉलिटिकल इक्वालिटी जे समस्त पॉलिटिकल इक्वल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर गोटे वोट एवं तांको पियोनर मध्य गोटे वोट दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल इक्वालिटी जोटा कि आमे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोली कहते पॉलिटिकल इक्वालिटी समस्त गोटे लेके वोट थर्ड होची कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस शासन चलिबो कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार एवं जेते जेते कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तयारी हेची से माननको से मान हेबे दे विल बी द मेन गाइड इन एडमिनिस्ट्रेशन देश को चलाया पे यही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माने देश को देशर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करिवे डेमोक्रेसी की प्रोटेक्ट करिवे हमर देशर जो फंडामेंटल वैल्यूज फंडामेंटल प्रिंसिपल ताकू प्रोटेक्ट करिवे सो दैट इज थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को माने कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी असेंबली इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जुडिशियरी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एई जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को तयारी कराइछि से माने हेबे तार प्रहरी डेमोक्रेसी रो प्रहरी है कि काम भाव में काम करेंगे नंबर 3 नंबर 4 हला इंडिविजुअल फ्रीडम ए डेमोक्रेसी कैनॉट फंक्शन विदाउट इंडिविजुअल फ्रीडम सो दैट इज ए सेइंग जो देश रे द गवर्नमेंट इज आफ्रेड ऑफ द पीपल दैट इज ए डेमोक्रेसी एंड इन वेयर द people are afraid of the government that is autocracy that is the difference between simple difference between autocracy and autocracy and democracy where people are afraid of the government it is autocracy where government is afraid of the people it is democracy so say context re second suggestion जो आछि free and fair elections परे third suggestions जे आमे केमती आम the criminalization of the political field कि भले रे हेची ताकू आमे कि भली भाव रे हैंडल करिबा हमरो इट इज ए कॉमन कंसर्न and thinkers club should feel more concerned about it. I am happy that somebody has one of the friends has suggested this the criminalization of politics को आमे केमती प्रिवेंट करिबा तो criminalization जो हेची आपण माने सुनिथिबे पढिथिबे देखिथिबे खबर कागज रे जे बर्तन 1/3 member of the parliament have criminal background so the situation is similar in case of assemblies also duty assembly of parliament law making body is full with law breakers the city how who will protect democracy so this is a fundamental issue which we have to address so सेथिबे अनेक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेची क्रिमिनल केमिनी की भली करा हेची के भली हमर विभिन्न प्रकार लॉ सु पास हेची रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड करा हेची संशोधन करा हेची से रखा हेची जे पार्लियामेंट मेंबर बा असेंबली मेंबर पे ठिया हेबे से एफिडेविट 3टा एफिडेविट देबे गोटी एफिडेविट रे से कहिबे जे तांको he has not been charge sheeted and he has not been jailed से इंफॉर्मेशन देबे नंबर 2 होची जो एफिडेविट से करिवे से नंबर 2 एफिडेविट रे से कहिबे जे मोर इम्प्रिजनमेंट मोर देन जो जहार पनिशमेंट हबो 1 ईयर से भले इम्प्रिजनमेंट मोर हेई नाही नंबर 3 से कहिबे तांकर टोटल रेकर्ड
career total record of allegations against him ताकू से देबे नंबर 4 रे से तांकर पैसा रोजगार तांकर कोन प्रॉपर्टी अछि तांकर कोन एसेट्स अछि लायबिलिटी तार मध्ये से एफिडेविट करके जणैबे कारण money has become also sister of the crime because our democracy our money our has been monetized has been criminalized unfortunately in this country but there is a ray of hope काई में कथा कहूची मु इलेक्शन कमिशन थिला बेले मोर साउथ सुदान रो चीफ इलेक्शन कमिशनर से आसीथिले इंडिया को फॉर इलेक्टोरल ट्रेनिंग so I was looking after the capacity building training programs in the commission so I asked him they say केबळी किछे साउथ सुदान रो काई आसीन he is chief election commissioner आउ तो कांगर किछि प्रमोशन नाही तो सीए काहे कि आसले इंडिया को ट्रेनिंग ना पे सीए कहले मते गोटे कथा व्हिच आई रिमेंबर आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू सीए कहले we in Africa come to India for 3 reasons number 1 reason is India has Taj Mahal and number 2 he said India has Mahatma Gandhi and number 3 he was asked when I asked him number 3 what is the number 3 number 3 he said something he said Indian electoral democracy जो डेमोक्रेसी के हमें कहूचे एते आलोचना समालोचना करूचे but we have a very good image of Indian democracy outside India I always say that I can only give 2 cheers to democracy not 3 cheers because आम डेमोक्रेसी रे कोन कोन फ्लॉज रहिछि कोन कोन दोष त्रुटि रहिछि सेटा हमें जानिचे आपण मान जानिछि but this is the public image of India outside India where they say we value India for these 3 reasons Hillary Clinton when she was foreign minister of America foreign secretary she had come to India I was in the election commission and in the election commission there was a press conference in the press conference he declared that we consider Indian democracy as the global gold standard she repeated the same statement in another press conference in Chennai I asked another Southeast Asian friend so when he started speaking eloquently very positively about Indian democracy what that aspect which impressed you से कहले जे हमर पावर ट्रांसफर एते सहज रहन अनेक अफ्रीकन कंट्रीज रे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज रे बट मोर इन अफ्रीकन कंट्रीज से कहले केमती आपन को इंडिया रे इलेक्शन परे जो मान डिफीट हेगले से माने रिजाइन कर दउछंदी एवं आपनकर एते पीसफुली केमती पावर ट्रांसफर होची तो खाली खाली रिजाइन कर दउ नाती जदि से देखिले ताक इलेक्शन से हारुछंती फाइनल इलेक्शन फाइनल काउंटिंग सरीबा पूर्वरु मध्य से सब अनेक देयर आर सेवरल एग्जांपल्स कैंडिडेट माने जो माने हारि जाउछुनी कैंडिडेट से माने रिजाइन कर दियो सो पावर ट्रांसफर in our country is very peaceful always one government comes so when that government is defeated election through elections another new government comes and power so this is one thing which they like very much तणु नेक्स्ट पॉइंट जोटा आपण माने कहि सजेस्ट करछथि जे क्रिमिनलाइजेशन पे एकथा हम डिस्कस कले ब्रीफली हम या परे समय पाइले अधिक डिस्कस करिबा वोटर्स विथ एपिक देयर वाज अ प्रॉब्लम जे वोटर्स विथ एपिक electoral photo identity cards but not in the name not in the electoral rolls this is a big problem in India ए प्रत्येक इलेक्शन से प्रॉब्लम हम फेस करूचे because हमर जो प्रोविजन रहिछि प्रति वर्ष इलेक्टोरल रोल will be sanitized will be corrected सही प्रोसेस ता बोथ हम ठीक भाबरे काम करू नै खाली आई विल गिव यू वन आईडिया जो केते लोक हमर इंडिया रे वोटर अछि मोर वोटर की संख्या होछि 91 कोटी लोक 910 million people are the voters in India imagine you think about the gigantic exercise
Indian total voters, number of voters in India is more than the number of voters in the 44 European countries. The number is more than the 54 African countries. The number of voters in India is more than the number of voters in North of America and South America together. So the number of voters is more than, except China, more than Asian countries together, democratic countries. So this is a good elections kole. We require 11 million workers. 11 million, imagine. So some American reporter has reported this, that in election time, if any person outside India goes to India, then you will find a different India during elections time. The entire, the whole country looks like a war zone. 1,200 trains crisscross the country, full with security personnel with guns and ammunitions. So this is the scale of the Indian elections. So जदि आमर ये किसी दोष त्रुटि हो क्रिमिनाल केसेस आमर जो एपिक कार्ड गोटे बड़ प्रोब्लेम बेले बेले एपिक कार्ड वोटर कार्ड पाखे अच्छी किंतु इलेक्टोरल रोल आपन ना ना देयर आर सेवरल रीजंस. तो वन ऑफ द रीजन इज जेते सब वोटर माने मरी गले लास्ट इलेक्शन बंची थे तो मरी गले. That is to be voter list is to be changed and voter roll is to be changed. से change हला नहीं कहार transfer है गला place change of place है गला तार हला तार से voting पे पहुंचला हल को electoral roll तार ना नहीं. So these are the minor issues. Sometimes many genuine voters they face problems, but this is a problem which cannot be, which can be, we can overcome this problem. Because as I understand, Election Commission has introduced an online system in which if you do not find your name in the electoral roll, you can download the app and you can also submit your application for rectification of the electoral rolls. So that is not a very big issue, but it is an issue. Let us accept it. Contribution to party fund. This is a sensitive issue because of the monetary power. One thing is clear, that Indian electoral system, Indian voters, Indian vote catchers, Indian vote electoral candidates, they all of them, in most of the cases, the entire system has been monetized. So money plays a major role. Apan mane lakhyo karthibe, but the minimum to kharcha jane candidate karibe se सीमा प्रति 5 वर्ष रे रिव्यू होछि. The year in which I left Election Commission, se सीमा थला 24 एमएलए को पई 24 लाख एवं एमपी मानक पई 40 लाख, depending on the size of the constituency and size of the state. एमपी मानक पई 40 लाख एवं एमएलए मानक पई थला 24 लाख. एबे सेटा रिवाइज हेई करी एबे I came to know that recently it has been revised. जे एमएलए हेबे तांकर खर्चर सीमा वर्तमान बढ़ाई दिया कि 60 लाख कराई एवं जे एमपी पे कैंडिडेट हेबे तांकर सीमा बढ़ाई कि 90 लाख 95 लाख टका कराई. सो जे कंटेस्ट करिवे एवं एटा on the basis of the demand of the party, एटा इलेक्शन कमिशन लदी दे नांती बढ़ी नांती. Parties have made election commission and convened the election commission जे हमर खर्च बढ़ी जाउची. हमर गोटे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी रे 300-400 लेखे पोलिंग बूथ अछि. से गोटे गोटे पोलिंग बूथ रे जने पोलिंग एजेंट हम जे रखिबु ताकू हमकु पैसा दाउ पड़िबो.
हमर कैंपेन मटेरियल पे पैसा खर्च होउची हमर गाड़ी घोड़ा रे पैसा खर्च होउची तेणु दे यूज टू कन्विन्स द इलेक्शन कमिशन जे और ए सीमा को बढ़ा जाऊ बट दिस इज एन इश्यू ए इश्यू केमती सॉल्यूशन हबो यार सॉल्यूशन सेति में इलेक्शन कमिशन अनेक प्रोविजन करिसेंती आउरी हबा दरकार प्रथम कथला कैंपेन पीरियड आपण मने थिबो आपण कलेक्टर अछंती जणे एथरे कि हमर कि अछंती देवराज सेनापति देवराज बाबू अछंती देवराज बाबू आपण यू कैन अंडरस्टैंड बेटर आपण अनेक इलेक्शंस कंडक्ट करिथिबे सुपरवाइज करिथिबे तो इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर is a very big issue कौन सी साधारण लोक वर्तमान politics has become contesting election has become so expensive पंचायत मु सुने जो सुनची ओडिसा आसिया पर हम सुनची जे ओडिसा रे मध्ये पंचायत इलेक्शन रे सरपंच माने 40 लाख 50 लाख टका खर्च करछनी कोटी टका खर्च करछनी so this is the situation fee bees is another issue तो ताकू हमें केमती हैंडल करिबा एवं जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस को केमती कम करिबा सेति इलेक्शन कमिशन अनेक स्टेप नै छिनी वन ऑफ द मेजर स्टेप्स इज जो कैंपेन पीरियड आगे थला 45 डेज कैंपेन पीरियड को कमे की बर्तन 15 दिन कराई कारण कैंपेन पीरियड जेते लंबा हबो खर्च सेते बेसी हबो so similarly there are certain initiatives some initiative election commission has already taken कैश पेमेंट होची जो कैश डोनेशन हो दोथले कैश डोनेशन सीमा बर्तन बड़ा बढ़ाई दियाई जे आगुरु 2000 टका देले आपण डोनेशन देई परथले विदाउट रिसीट तो सेटा को बर्तन इलेक्शन कमिशन रिलैक्स करछंती एवं इलेक्शन कमिशन इंपोज करछंती जो 2000 टका रो जहा अधिका डोनेशन जे दबो सेटा चेक पेमेंट करिवे सो दिस इज अनदर एरिया which requires more debate minimum qualification आपनकर प्रस्ताव भितर आछि जे एमपी पे ठिया हेबे तांकर अति कम रे मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हबा दरकार एवं जे एमएलए पे ठिया हेबे तांकर अति कम रे क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन हबा दरकार आई विल टेक यू टू हिस्ट्री जे हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन गोटे इश्यू जे हमरो ए पर्यंत कौन सी कैंडिडेट पई ए नियम लागू नहीं मिनिमम क्वालिफिकेशन नियम नहीं ये संपर्क डिबेट हेइतला इन द पास्ट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मध्ये डिबेट हेइतला जते बेले इंडिया रो लिटरेसी रेट थला 22% at the time of 17 to 22%. In some areas it was 7 to 8% literacy rate. तेणु सेते बेले हमर जो माने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स माने बदे चिंता कले यदि आमे मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स करिबा ताले 80% लोक इंडिया रो से माने डिस्क्वालिफाइड हे जे माने वोट देई पारि माने एई अवस्था थिला ब्रिटिश अमल रे 1918 मसिया रे जेते बेले क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी फिक्स कराइतला जे जणे लोककर जदि अति कम रे एकरे कम जमी नाही जहांकर घर रहिबा घर नाही जहांकर बयस 70 वर्ष रु अधिक से वोट दे परिबे तेणु दार जो हिस्टोरिक डिसीजन 1947 रे आफ्टर इंडिपेंडेंस आमे डिसाइड कलु आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आवर लीडर्स ग्रेट लीडर्स दे डिसाइडेड दैट वी विल हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज समस्त भोट अधिकार रहिबो से साक्षर होइथांतो निरक्षर होइथांतो किंतु एई जो आर्गुमेंट पछरे मध्ये जुक्ति अछि वर्तमान जवान कहउछन जे मिनिमम दरकार एंड नाउ हमर literacy rate has become 5 times higher than what it was in 1947 so tenu eta ko ame vichar kariba dakar with special provision for the weaker sections or for the illiterates वर्तमान voter जो माने voting age रे अछंती group अछंती so sethru most of them are literate so I am not very sure whether this is an issue. So these are few issues which you have raised
and mu khali kohibi ame di discussion ta ame continue kariba tahale au ketata issue achi taku apno highlight kari paranti in future, particularly Barada Prasanna Das ku I would suggest there are certain issues mu taku flag karchi. So I have flagged about 9 to 13 issues. So which will keep your session engaged for the, I think, next 3 sessions. One very important issue is anti-defection law. So anti-defection law, upare vartan question helani, because anti-defection law is now being used for political purposes. That is one issue. Second issue is the use of common electoral rolls. The state electoral rolls alaga habo, central electoral rules alaga. There is no justification. Some people view that there is no justification to have 2 separate parallel electoral rolls. Because state electoral rolls, they draw information and input from the central electoral rolls. You know, center states electoral rolls, this difference should be abolished, and there should be only one electoral rolls for the entire country. I think there is a strong reason to support this view. Even National Law Commission has also supported this one. So this is one. So number 2, use of common electoral laws. Number 3 is another issue I would like to flag: disqualification of corrupt practices. जो माने corruption करुछन, जो माने corrupted हेइछन्ति, they have been proved, they have been jailed, they have been punished for corruptions. They should be disqualified from contesting elections. This is an issue needs just more discussion. Number 4, making false declaration. ये false declaration करुछन्ति, तांकु they should be also debarred from contesting elections. This is another issue. Next issue number 4, rule making authority with ECI. बर्तमान इलेक्ट्रल आपण माने जानि थिबे बा सुनि थिबे, इलेक्ट्रल रो जते रूल थकु हम देश तयारी होछि ताकु इलेक्शन कमिशन तयारी करंते, ताकु तयारी करंती लॉ मिनिस्ट्री तयारी करे. तेनो इलेक्शन कमिशन को व्यू हला, which has been supported by Supreme Court also. Election Commission को व्यू हला जे in the electoral rules the election commission should be consulted. Number 5, rule making authority with ECI. Number 6, charged budget. जेमति Supreme Court तांकर देते खर्च, से खर्च पे Supreme Court is not accountable to the parliament, to the government. So similarly, election commission should have a system of charged budget. So तांकर their expenditure is not monitored by anybody else. So that is one. That is number 6. Number 7, registration and deregistration. This is a burning issue. I would like to draw your attention. It's a burning issue. Why it is a burning issue? Because you may not be aware. We have more than 6,000 political parties in our country. We have close to 50 regional parties, about 8 national parties, but more than 5,000 registered parties. Our 3 system achi, a registered party, one category, recognized party, another category, national party, regional party, 3rd category. को candidate केते vote पाइले, केतरा state रे तांकर केतरा MLA MP हेले सी recognized हेबे as a state party, as a national party. So there are some rules. तेणु ए जो registration and deregistration, there are अनेक party अछंती हम देश रे, thousands of parties. They are nameplate parties. तांकर कौन सी एभिनी ठिकाना भी नहीं. So 100 people come together, or affidavit sign करले, and they publish in the newspaper, and they become a political party. So एई भला party अनेक अछन, तेणु election commission बारंबार लेखिलेनी. Last लेखिथिले 2004 मसरे, तथापि 20 वर्ष होयानी. Election commission बारंबार लेखिलेनी जे you have given us the power to register political party. Similarly, you should also give us the power to deregister the political party. जहाँ को हम registration register कलु, यदि से election fight कला नहीं, किंतु सब electoral benefit नेला, ताले से party के हमें deregister करूँ. So this is pending.
but Supreme Court has supported this view. Hopefully, government will accept. Compulsory voting is another issue. One country, one election is another issue. Selection of election commissioners and chief election commissioners is another issue. Creating a level playing field MP lad is another issue. So these are the issues. I leave it here for future debate and discussion by the distinguished members of the Thinkers Club. Thank you. Sir, धन्यवाद sir. भगवान प्रकाश तंकर केंद्र स्तर रे मु नेट रो देखुथिले सरंकर फोटोग्राफ आपण राजीव गांधी के संगे अछि, पूर्वतन राष्ट्रपति कलाम को संगे अछि, इंदिरा गांधी को संगे अछि, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू संगे अछि। भली भाव रे तंकर प्रतिभा दिल्ली रे अनेक व्यक्त तंकर बहु अनुभूति हमकु से कहिले।